ओके. सो आमी जेन्ना देवा कडल्यान जायते एक्सपेक्टेशन दवरतात, आमी देवा कडल्यान जायते आशा दवरता, वय की ना. आनी देवाकूय दिवपाक आवडो आसा, हो देवान ऑलरेडी करून पासून दवरल्या. खाली आमकां गिन्यान तो दिता, कशें तें केल्लें आहा पळय आपणावप. हांगा प्रश्न दी म्हणपाचो न्ही, हांगा प्रश्न दिल्लें आहा पळय कशें आपणावप. खाली आपणावपाकूच आमकां शिकवणीची गरज. आमी शिकोवंक सोदिना आनी देवाचें सगळें कितें आहा पळय आमचे देवा कडल्यान कितें जाय आमकां तें आपणाक तें आमकां जाय आनी देवा कडेन मागीता. सो हांगासर खंय ना खंय आमी आजुनी चुकता. कितें म्हणून चुकता? देवा कडेन मागूंक सोदतात जेन्ना देवान आमकां आपणावंक शिकयता. शिकचे जाग्याचेर आमी आजुनी देवा कडेन मागता. आनी असो जो मनीस देवा कडेन मागयत आहा तो मनीस कितें करतलो? तो ऑफेन्सारूच रावतलो. तेका आदलेंच जिवीत चलयतलें, आदलोच सोयीम घेवन बसतले. म्हणून तो मनीस केन्नाच सॅटिस्फायड जावचो ना. प्रेज गॉड. कित्याक वो वेळ आपणावपाचें जें कितें जेजून क्रुसाचेर करून दवरला पळय तेका आपणावपाचो वेळ. आनी कशें आपणावप तें आमकां पळयत न्हू शिकयता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आतां जेन्ना आमी हे दिसांनी शिकताले रिपेंटन्स, होय की ना. रिपेंटन्स म्हणजे कितें? मन बदलप म्हणजे कितें? वॉट इज रिपेंटन्स? हें शिकयलां फर्स्ट टायम न्ही. So it contains of 3 parts: conviction, confession and conversion. But at the end repentance, at the end सगळो result कितें आहा? At the end मन बदलप. म्हणजे कितें? चिंतना बदलप. चिंतना जर बदलो ना जाल्यार आमचे ते आदलेच सोयीम आसलेले देवा दी रे, देवा दी रे, देवा दी रे. आनी मेळोना जाल्यार देव ना करता. थंय देवाचो पावर दिसती पडना, थंय आमकां कांय दिसती पडना. आनी आमी इमोशनल बाबा शांबा रेबा करीत आसतले, देवाक मागणें करीत आसतले इमोशनली. जेन्ना तूं जाणाय गाडी चलोवपाक, तूं मागणें करतलोय? हॅलो, बायक चलयता न्हू तूं? जेन्ना तूं बायक चलोवंक जाणाय तूं देवा कडेन मागतलोय? जेन्ना बायक तूं चलोवंक जाणा जाल्यार देवाक तूं मागोवंक वचना. देवा म्हाका एक गाडी चलोवंक शिकय रे, ओ म्हाका गाडी तूं चलय, तूं चलय, तूं चलय. तूं देवान कितें केलां? तुका तें जें शिकवण, जेन्ना तुका चलोवपाची ती शिकवण गावल्या, प्रॅक्टीस केलाय, प्रॅक्टीस करून करून आतां तूं मास्टर जालाय. एक गाडी चलोवंक जी आमकां एक टायमार जायना आसली तीच गाडी आतां तुज्या हातीन कांयच नको चलयताय. कित्याक जालें तें आतां? तुवें खूब मागणें केलें म्हणून, खूब मागणें आमी केलें म्हणून जालें हें? हांगासरूच आमी चुकता. जे जाग्यार तुका शिकवण मेवता त्या जाग्यार आमकां वचपाक वेळ ना. पण जे जाग्याचेर आमकां खाली मिलाक सोदता, खाली आमचे हिलींग, आमचे पेकोवण्यो आमी हेच सोदता, ते पेकोवणी मेवले पासून आमचें मन बदलता? मेन खंयची पेकोवणी? आमचें मन बदलप, चिंतना बदलप. चेंज ऑफ थिंकींग. चेंज ऑफ थिंकींग. वाय द चेंज ऑफ थिंकींग? कित्याक
चिंतना बदलपाक जाय. कित्याक चिंतना बदलपाक जाय? कित्याक जे चिंतना आमी घेवन बसल्यात तें चिंतना ते देवाचें जें कितें केलां तें भितर फिट जायना. देवान जेजून जें करून दवरलां तें तुजें चिंतना आदले चिंतनाचे प्रमाणे आहा जाल्यार तें तुका पावना. You cannot receive what God has given to you. Praise God. Hallelujah. जर तू जर मन बदलताय आनी जें कितें देवान जे आपल्या पुता वरवीं करून दवरलां तें तुका मेळोवंक जाता, तें तुका घेवंक जाता. पण जर तुजें मन जर बदलो ना, तुजें चिंतना जर बदलो ना, आदली चिंतना घेवन बसलाय जाल्यार देवान केल्ले वस्तू तुका मेळपाचे ना. तुजें बरेपण जें केलां ते पासून तूं त्रास काडटाय, तुका ग्रेस कायन बोल्ला तेतूनय तूं त्रास काडटाय, तुका सगळे वाटेनी तुज्या सोयरा दाऱ्या मदें सगळें तुका बरेपण दवरलां तें बरेपण पासून तूं ओगडायताय. कित्याक? एकूच कारणाक लागून जें म्हाजें मन बदलोना. मन कशें बदलता? चिंतना कशी बदलता? चिंतना कशें बदलता? जेन्ना तुका गमलें की म्हाजी संवसारी चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे सेम ना जाल्यार हांव कितें करतलो? जेन्ना देवान म्हाका शिकयल्या, कित्याक देवाची जर चिंतना म्हाजे कडेन ना हांव देवाच्या राज्यांत ना. हांव संवसारी चिंतना घेवन देवाच्या राज्यांत हांव पावचो ना. इवन दो जेजून देवाचो राज आमकां हांगा हाडून दिल्ले आहा, देवाचो राज आसा, आतांच आसा आमचे पासत. नाल्यार मॅथ्यू 3:2 रिमूव मॅथ्यू 3:2. प्रेज गॉड. जेजू स्वताहून म्हणटा की रिपेंट जायात आनी देवाचो राजवट लागीं आसा. प्रेज गॉड. जिवीत बदलात. रिपेंटन्स म्हणजे जिवीत बदलप. आनी जिवीत कसो बदलता? मन जर बदलो ना जाल्यार जिवीत बदलचें ना. चिंतना जर बदलो ना जाल्यार तुजें जिवीत बदलचें ना. सगळें डिपेंड आसा तुजे चिंतनाचेर. तूं कितें चिंताय पळय ताचेर तुजें जिवीत निर्भर आसा. म्हणून रिपेंट जावपाक आमकां सांगता. जेजून जेन्ना पयलें सुरवात केलें आपलें प्रवचन सुरू करपाक, पयलें तेणें सुरू केलें आनी कितें म्हणून सुरू केलें? मॅथ्यू 4:17. पळय, पयलें कितें? तेन्नाच्यान म्हणजे जेन्ना ताची मिनिस्ट्री सुरवात जाली, आरंभाच्यान जेन्ना मिनिस्ट्री ताणें सुरवात केली, पयलें कितें म्हणून स्टार्ट केलें की मन बदलात. पयलो ताची मिटींग, तो जे पयले प्रेयर सर्वीस जेन्ना सुरू केलें ताणें कितें सुरू केलें? कितें म्हणून सुरू केलें? मन बदलात. प्रेज गॉड. सो जें ताणें सुरू केल्या थंयच्यान ताणें सुरवातीकूच ताणें सांगलें की मन बदलपाची गरज आसा. प्रेज गॉड. मागीर तेन्नाच्यान जेजून
ते उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात. कित्याक सुर्गीचे राज येवचे जाले तेन्ना जेजू आसलो, जेन्ना कुडसार वचोन परत जिवंत जातलो, सुर्गीचे राज आमकां मेळ्ळ्या, सुर्गीचे राज आमकां दिल्या, सुर्गीचे राज एवेलेबल आसा. आतां आमकां सुर्गीचे राज आसतना पासून नासलेले खंय जियेतात. आमी देवाची भुरगीं आसून पासून एक अनाथ खंय जियेतात. एक देव बाप जो आमचो गवळी, आमचो बाप, तो आमचो बापूय आसतना आमी कोण न्हू खंय जियेता. आमकां देवाचो आदार ना खंय आमी जियेतात. देव आमकां पयस आसा खंय आमी जियेतात. देव आमकां दिसती पडना म्हणून आमकां देव ना कहो दिसतात म्हणून आमी देवाक रिलीजन करून उडयल्या. प्रेज गॉड, हालेलुया. जेन्ना देवाचो राजवट आमकां देवान हांगा संवसारांत हाडून दिला, आमी मरतकूच देवाचो राज आमी अनुभवना, हांगाच एक्सपिरियन्स करूं येता, हांगाच देवाचो राज आमी मेळोवंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. सो देवान आमकां आपलो राजवट दिला, पूण कितें करचें पडलें? मन बदलचें पडलें. आनी मन बदलपाक कितें आहा? पयलें म्हटल्यार तुजें कितें आहा पळय, 1 जॉन 1:9 कितें म्हणटा? तूं जर आपले पातो कन्फेस करताय, देव म्हणटा फेथफूल आसा, जस्ट आसा टू गिव यू फॉरगिवनेस. प्रेज गॉड. कन्फेस करताय तूं ओळखून घेताय जाल्यार तुका तें पातकांतल्यान तुका बोगसणी आसा, प्लस जें प्रमाणीपण नासलें तितूंतल्यान तुका क्लेन्स करता, तुका धुवन काडटा. हें जालें. हें कितें आहा? परत परत आमकां तें दूख धरपाची गरज ना. कित्याक आमच्या कामां, आमच्या करण्यांनी, आमच्या हितून आमी केन्नाच नितिवंत जावची ना आनी जावपाची ना. म्हणून तुज्या करण्याक लागून आतां हुस्को घेवप ना. आतां जेजूच्या करण्याक लागून आमी फुडें सरप. जेन्ना तुका आपल्या पातकाचो दूख दिसलें, तुका आतां दुसरो कन्फेशन करूंक जाय, दुसरें उचारपाक जाय. कितें? तुवें केलां तें न्हय, तुवें केलां तें तुवें दिलें, पण जेजून कितें केलां पळय तें. आतां तुवें केलां तें तुवें दिल्या उपरांत परत आमी रेमटेम चालूच आसता आमचें. पण जें तुवें दिलाय आतां तुजें गेलें, पण तुजें तूं गेलें तें म्हणून परत परत तूं उलोवपाची तुजी गरज ना. आतां तुवें कितें उलोवं येता? जें कितें जेजून केलां. जेजून म्हणटा हांवें तुमकां शिरापांतल्यान सोडयल्या. तोरीत कितलेच जाण हें म्हणटात की तूं शिरापान आहा, तूं हें आहा, तूं हें जालें. थोडे प्रिचरी म्हणटा तुवें अशें जालें, तूं शिरापान, तुज्या घरान शिराप आसा, तुजें हें आहा, तुजें एन्सेस्ट्रलाचें शिराप आसा म्हणटा की ना. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा? तुका देवान शिरापांतल्यान सोडयल्या. क्रायस्ट हॅज रिडीम्ड यू फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ. जावं ते हाच्या पंजाच्या, जावं इवन तुज्या ओन उतराच्या. जर आमकां सोडयल्या म्हणून सांगलां, म्हाजें काम कितें? जर हांवें पातकां सोडून दिलें, दूख धरून हांवें सोडून दिलें, आनी आतां कितें घेता हांवें केलां तें दिलें भायर, पण जेजून केलां तें घेवचें पडलें की ना. आतां दीस आनी रात हांवें केलां तें दीस आनी रात तुका उगडास करपाची गरज ना. तुजे कडेन कितें आहलें, तुजी करणी कितें आहलें पळय तुवें दिलें, आतां जेजूची करणी घेता तूं. प्रेज गॉड. रिपेंटन्स म्हणजे कितें? म्हणजे आतां तुजी चिंतना, तुजी जी चिंतना आहलें तेका भायर मारलें, आतां जेजून जे दिल्या पळय ताची चिंतना घेता. ताचें कन्वर्जन जाय. एक चिंतनाचें काडून दुसरी चिंतना घेवप, ताचें कन्वर्जन जाय. आमी कन्विशन शिकला, आमी कन्फेशन शिकला, आतां आमी कन्वर्जन शिकतले. प्रेज गॉड, हालेलुया. आमकां शिकून गरजेचें ओ ना? गरजेचें. आनी आमी शिकूंक सोदिना
आनी आमकां खाली देवान बरो केल्लोच जाय, खाली देवान बरो केल्लोच जाय. जो बरो करिना घडये की मिनिस्ट्री सारकी ना, ओ हांव सारको ना, कसो सापडटा पळय. आनी मागीर आमी मिनिस्ट्री बदलत रावता. अरे हेंच उतर आनी तेंच उतर. तुका रिलेशन कोणा कडेन वाडोवपाक जाय? उतरा कडेन. हांगा मनशाचें कांय ना, हांगा तुजें उतरा मदें. जर तुका उतर गावता ते उतरा कडेन तुवें रिलेशन वाडोवपाक जाय. आमी उतरा कडेन रिलेशन वाडोवचे जाग्याचेर आमी मनशाक पळयतात. हें पळयना ताजे उर्व्यान सारकें टिचींग आसा की ना, हें पळयना देवाच्या उतरा प्रमाणे ताजे वचना सारकी वचना प्रमाणे तुका शिकवण आसा की ना, स्क्रिप्चरा प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवप आसा की ना, तें पयलीं चॅक करपाक जाय. प्रेज गॉड. आमी जे कितें चॅक करून थंय थाराव घेवपूक जाय. सगळें म्हणून धाडलें म्हणून जायना. जे जाग्यार तुका प्युअर शिकवण पवित्र आत्म्याचें शिकवण जर गावता, पवित्र पुस्तकांत तें शिकवण जर तुका गावता, 100 जाग्यार धांवन कितें मेवतलें? प्रेज गॉड. आमी पत्ते फटवतात, हांगा मेवचे पण थंय मेवता खंय दिसता. आनी तुजें रिलेशन मनशा कडेन, तुजें रिलेशन उतरा कडेन आसपाक जाय. एक जागो आसता ना न्हय की तुका उतरां सारकी शिकोयनाच. थोडे खाली गायना करून सोडटा, थोडे खाली 15 मिनटां टिचींग आनी बाकी सगळी गायनाच. आनी त्रास पिळेच्या टायमार ती गायना तुका ती पावचे ना. तूं गाडी चलोवंक जाय, गायना केला म्हणून गाडी शिकतलोय? आमकां ती वर्शिपूच आमकां दिसता की हे वर्शिपूच सगळें. हे वर्शीप कितलोय कर, पण गाडी जर शिकोवंकूच जाय, तुका प्रॅक्टीस करूंकूच जाय, गाडी चलोवंकूच जाय. एक सायकल चलोवंक जायना स्टार्टींग आमकां. एक सायकल कितलेय दिम्यो घालून मागणे पासून केल्या पासून तूं सायकल शिकोवंक पावचो ना. सायकल शिकोवन जर सायकल हातीन घेवचें पडलें, 10 फावटी पडचें पडलें, आनी मागीर तें सायकल तुका जाय पळय तो चलयतलो. तशें जें जिवीत हे सायकली भाशेन, हे गाडये भाशेन आमकां देवान आपलें उतर दिला चलोवंक, पण शिकोनासतना कशें चलयतलें? अशें न्हय चुकलो म्हणून. सायकल चलयता कितले फावटी पडटात आमी. हांव कितलेच फावटी पडला सायकल चलोवपाक वता, कितलेच फावटी पडला, पूण हांवें सोडून दिलें. म्हणचे म्हाका जावचें ना तें. सायकल चलोवंक जायना. तो मनीस आज कार चलयता. कशें चड आनी मागणें केलें म्हणून? प्रेज गॉड. चड मागणें केलें म्हणून हांव सायकल गाडी शिकलो ना. तुवें तेका जें कितें तुवें शिकूंक जाय तो तें शिकलोय, प्लस तुजें प्रॅक्टीस चालू केलें. प्रॅक्टीस करतना जायते फावटी तूं चुकलो, जायते फावटी चुकल्यात. तूं बायक समजत शिकलो ना. इवन तूं शिकलोय तरी मदें काड खंय खंय एक मिस्टेक जाता आनी एक्सिडंटूय जाता. म्हणून सायकल बायक वा कार उडोवपाची भायर ना. प्रेज गॉड. सो हांगासर कितें आतां तुजें आनी ते बायकी मदें, तुजें आनी ते सायकली मदें कितें आहा? रिलेशन वाडोवंक जाय जाल्यार डेली ताजे कडेन टायम दिवचो पडलो की ना, डेली तुजी शिकवण घेवचें पडलें की ना, प्रॅक्टीस करचें पडलें की ना. तसोच जर आमी गायना केलें आनी म्हणटा अरे सायकलूच चलोवंक जायना मरे, अरे बायकूच चलोवंक जायना मरे. ते आमकां कोण ना कोण चुकीची नॉलेज दिल्लें आसतना आमी खाली वर्शिपाचेरूच फोकस दिता. वर्शीप म्हणजे रॉंग न्हय, पण तुजीच लायफ तुका चलोवंक कळना जाल्यार वर्शीप कितें फायदो मेळटलें? तुजें जिवीत तुका चलोवंक जायना जाल्यार ते आनी फुडें ते सगळे गायना करून कितें फायदो? मेन आमकां कितें शिकवण घेवन आनी गायना चालू कर. प्रेज गॉड. तुजे कडेन शिकवण आहा, त्रास पिडेचे टायम आतां हुस्को करचो ना, गायना चालू करतले.
जेन्ना तुका वादळ मोड येयले तुका हुस्के कोतीना तू गायना चालू करतलो गायनाचो वॅल्यू खंय वाडटा हांगानूय हांगा शिकपाचो टायम आनी जो शिकलाय म्हणजे कितें तुका खात्री आहा शिकलाय म्हणून गाडी चलोवपाक तुका खात्री आहा म्हण तूं भियेनाय खंय कशें गियर घालप कशें ब्रेक मारप कशें एक्सरे उडप तुका खबर आहा आनी केन्ना एक्सरे मारप तें सगळें केन्ना ब्रेक मारप केन्ना रेस ओडप तुका सगळें खबर आसा म्हणून तूं हुस्केनाय तुका खात्री आसा प्रेज गॉड आनी हें सगळें जालें तुज्या प्रेयराक लागून तुवें वर्शिपाक लागून जावंक ना हें तुज्या प्रॅक्टिसाक लागून जालां हें शिकून शिकचे जाग्याचेर आमकां कितें आहा डायरेक्ट देवा तूं गाडी म्हाका चलोवंक दी म्हणजे देवाक सांगता आमकां गाडी तूं चलोवन दी प्रेज गॉड हें म्हणिना की देवा म्हाका विजडम दी गाडी चलोवपाक आनी शिकवण जाता थंय आमचो नंबर लेस जाता आनी हिलींग आनी हें तें जाय थंय नंबर वाडटा तूं शिकवण कांय ना ती हिलींग व्हरतलोय थोडे दिसांनी ती परती प्रॉब्लम तेत येतले तुका त्या टायमार बरें आसतलें कित्याक थंय भावार्थान जें मागणें जाता थंय हिलींग आसता की देवा उतर आहा थंय फ्रिडम आसा कसलेंय आसूं कितलेंय पोजिशनान आसूं न्ही तूं थंय फ्रिडम गावता जेजूच्या नांवान कोणूय उबो रावं जावं तो कॅथलीक जावं तो बिलिवर जावं जो आनी कोणूय जावं न्ही जेजू जावं तो मुस्लीम जावं हिंदू जो जेजूच्या नांवान उबो आहा आनी जेजूच्या नांवान चालू आहा थंय फ्रिडम आसा प्रेज गॉड कोणूय आसूं तो जो बिलीव करता जो स्वत मानता उतराक थंयसर फ्रिडम आसा जशेंच भावार्थ मनशा फुडें दिसती पडना फुडें ताका सुटका आसा पण दॅट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी मेन कितें जाता तुजे कडेन जर शिकवण आसा काड बायक आनी वयतलो नाजाल्यार सोदां म्हणटलो कार आनी वयतलो नाजाल्यार तूं म्हणटलो आरे म्हाका गाडी चलोवंक जायना ड्रायव्हर धरचो म्हणटलो प्रेज गॉड एकदां ड्रायव्हर मेळना कितें करतलें सोंपें आहा ड्रायव्हर मेळपाक तेंय ना कितले दीस तूं ड्रायव्हराचेर उबर डिपेंड रावतलोय आतां समज फाल्यां हांवें ड्रायव्हर येवंक ना तुजें काम धंदे बंद करतलें तुजो काम धंदो बंद करतलें तुकाच जर हें गाडी चलोवपाक खबर आहा तूं ड्रायव्हराचेर डिपेंड रावतलोय सो उदीक तूं आपुणूय तें गिन्यान घेवन बसल्या उदीक बरें न्हय ओ दुसऱ्याकूच चलोव न्ही गाडी आनी गरजेच्या टायमार तुका चलोवंक जायना आनी तोय ना तोय आनी खंय गेलो तूं कितें करतलोय घरांत न्हिदी आतां प्रेज गॉड हालेलुया सो म्हणून आमकां हें शिकवण हें गिन्यान वाडयता आमकां गिन्यान आमचे अशें देंवसार घालता की हें गिन्यान घेवंक दिना बाकीचे पेकोळी व्हर हांव फुडें पळयता कितें आहा तें तुजे कडेन पेकोळी येयला म्हणून देंवसार तुका म्हणटलो आतां कितें करूं ना तुका पेकोळी मेवले आसतना पासून देंवसार खंय 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 तुका पॉयजन घालतलो आनी परती आनी प्रॉब्लेम हाडटलोच हाडचो ना पण तुका जर जाणा त्या दुयेंसाक त्या पिडेक त्या देंवसाराक पयस धरपाक तूं जाणाय कशें तें देंवसार तुका नाडूंक शकता कशें देंवसाराचे उतरां तुका अगेन्स्ट येवंक जाता तूं जाणाय ताजी उतरां वळखूंक पावलोय आनी तो खबर आहा ताची जेन्ना ताजी उतरां तूं वळखताय त्या उतराक खंय धरप तुका खबर आहा तूं शिकलाय पण हें शिकवण आमकां नाका आमी कितें दिसता कितें आराधना म्हटल्यारूच देव म्हणटा आरे जिविताची गाडी चलोवंक शीक पयलें तुजे जिविताची जी गाडी आहा पळय तें तुका हांवें दिलें आहा फुकट आनी आतां तो तुका जिवीत दिल्लें आहा जिविताची इतले दीस मरणाची गाडी चलयता आतां जिविताची गाडी चलय म्हणटा आनी जिविताची गाडी म्हणल्यार सगळो कितलेय प्रॉब्लेम येतलोच ह्या संवसारान एक कुडीन आमी आसोसोच तो प्रॉब्लेम आसतलो ह्या संवसारान आसोसोच आमी प्रॉब्लेमान आसतलीं पण ते प्रॉब्लेम तुका लागचे ना जर तूं जाणाय त्या प्रॉब्लेमाक हँडल करपाक त्या प्रॉब्लेमाक आतां पळय जेजू आसलो म्हणून वादळ मोड येवंक ना देंवसाराक वादळ मोड हाडूंक ना हाडलें पण तें वादळ मोड जेन्ना जेजू आसलो तेन्ना कितें तरी ताका अटॅक केलें
अगेन्स्ट येयले पण कांय करूंक पावूंक ना. जेजू आसा तसो. प्रेज गॉड. तूंय तसोच. तुका दिसती पडटलें जायते वादळ म्हण दोळ्या फुडल्यान, पण तुजें कांय करूंक पावचें ना. कित्याक? कित्याक तुका गूड कळ्ळा, तुका शिकवण मेवला, तुका खबर आहा देवाचा थाल भियेता हेका खबर आहा. हेका खबर आहा हेका कांय करूंक जायना. तूं गाडी जाणा, गाडी चलोवंक जाणा जाल्यार घेतलो गाडयेन वयतलोय. सो देवसारा खबर आहा हेका कांय करून कांय फायदो ना म्हणून. सो देवसार पयस रावतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी जे दिसा आमी देवसाराचें आयकूंक स्टार्ट जाता ते दिसा आमचें प्रत्यक्ष जाता. जेन्ना देवसाराचें आयकूंक चुकोवन ओ आमी विसरोन ओ एकदां बरें जालें जातकूच परते आनी एकदां देवसाराचें आयकूंक जावंक शकता. परती मागीर आमचें एक्शन आनी परती रियलायज जाता अरे हांव चुकलो म्हणून. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हें शिकवण आमकां दर एक क्रिस्तांव भाव भयणांक जाय पडटा. आतां पळय एग्जाम्पल. अब्राहमाक जेन्ना देवान तेज्या फॅमिलीच्या घरांतल्यान तिका काडलो आनी हाडलें तेन्ना ताका भुरगीं आसलीं? भुरगीं आसलीं ना. जेन्ना अब्राहम म्हणटा म्हाका भुरगीं ना, कितें जाता तूं? कितें करूं हांव? देव कितें म्हणटा? रात दीस मागणें कर. देव कितें म्हणटा? रात दीस मागणें कर. आयज जे कितें गरज आहा ती बसावणी. अब्रामाकूय बसावणी दिली. हिलींग दिवंक ना, बसावणी दिली. भुरगे दिवंक ना, बसावणी दिले. आमकां भुरगे दिले देवा, भुरगे दिले देवा. आमकां काजारी जोडी दिले देवा मागता. पण देवान तें दिवंक ना. पण देवान कितें दिलें? बसावणी. बसावणी दिलें म्हणून भुरगे जाले? देवान बसावणी दिलें म्हणून भुरगे जाले? देवाच्या टायमार देवान बसावणी दिलें न्हू. आतां बसावणी दिलें म्हणून ताका भुरगीं जालीं? हॅलो. रोखडे ओ मागीर ओ लेट, पण देवान बसावणी दिल्या म्हणून भुरगीं जालीं ना. जर आमकां जेजूच्या गायांनी आमकां बरें जालें म्हणून बसावणी दिला, कितलीं जाण बरीं जाल्यात? जर जेजू म्हणटा की तो इतलो गरीब जालो की गरिबाचे शिराप आपल्यार घेतले आनी आमकां श्रीमंत, आमकां ग्रेस कांय भरला, मागीर कितले जाण आमी जाल्या? बसावणी न्ही, प्रॉमीस. आनी देव आमचे सगळे गोरच्यो पावतलो म्हणून सांगला. कितले पावले आमचे? आजुनी सर्कल ग्राउंड राउंड भोंवत आहा की ना? आयज जातले, फाल्यां जातले, परवा जातले म्हणून मेरीगोल्ड राउंड चालू आहा. प्रेज गॉड. सो कित्याक लागून जाता तें अशें? कित्याक? आतां अब्रामाच्या केसीक ताका जर बसावणी दिला आनी ताका कितें गरज आहा? आनी ताका आनी कितें गरज आहा देवा कडल्यान? बसावणी दिला. आतां कितें करपाचें? हें बसावणी जर ताका दिल्या कितें करपाचें? ताका भुरगे जाय आनी भुरग्यांचे बसावणी ताका दिल्या. तुका राष्ट्राचो बापूय केलें, चल केलें. देवान वचन दिलो, आपलें प्रॉमीस दिलें तुमकां, चल बसावणी दिली जाल्यार ताका भुरगे जातले. बसावणे प्रमाणे भुरगे जावंक जाय ताका, पूण ताका ते बसावणीत पुरो आपलो भावार्थ. प्रेज गॉड.
आता भासावणी दिला, पूण ती भासावणी तो म्हणटा, ओके म्हणटा. भासावणी म्हणपाक म्हणजे कितें, तें नांवूच बदललें. ताजें नांव अब्राम आसलें तें एब्राहम केलें, म्हणजे राष्ट्राचो बापूय ताजें मिनींग. सो नांवूच तेणें बदलून उडयलें, देवान ताका नांवूच बदलून राष्ट्राचो बापूय ताका केला म्हणून ताका नांवूच एब्राहम म्हणून दिलें. प्रेज गॉड. आतां इतलेंच पुरो काय म्हणटा, ते प्रॉमीस जे दिल्या ते पुरो काय म्हणटा. आतां सो कशें करतलो ताका, कशें आतां ताणें कितें केलें, भावाक ताका ओके ताका भासावणी मेवली, कितें केलें ताणें. आं कित्याक करूंक लायलें. कित्याक करूंक लायलें. होय, जेन्ना आमी वाचता आमचे जेनेसीस चॅप्टर 15 वर्स 1 आनी 2 तुका थंय मेवता कित्याक लागून ताका नखेत्रां मेजूंक लायलें, वो ते हितूंतल्यान रेंव्यांतल्यान चलोवंक लायलें. पूण कित्याक ताजी केस कसली आसली काय म्हणटा. ताजी केस कितें आसली. ना एजीचे प्रमाणे तें बरें आहा, ओके तें एक पार्ट. पूण कित्याक म्हणून ताका नखेत्रां मेजूंक. आतां आमकां दिल्या तुमी जेजूच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात. आतां कितें सो आमचे ताजे मदें आमच्या मदें आतां आमी जशें शिकता आमकां गमतलें, आमी खंय चुक्यो करता आनी आमकां कित्याक लागून तें डिले जाता. तें पळय तें ताजे वाटेन तो चुकलो आसतलो, पण देव चुकचो ना न्हू. ना तो चुकलो म्हणून पळय ताणें तो चुकलो म्हणून लागना देवाक. कित्याक देवान तें हें सांगू ना की तूं चुकतलो म्हणून चुकलो जाल्यार ना. देवान सांगला तुका राष्ट्राचो बापूय केला, तूं चूक वो ना चूक देवा कडल्यान जे प्रॉमीस आहा ते प्रॉमीस तुका दिला. तूं कितलेंय चूक, जेन्ना तूं जेजूच्या गायांनी तूं बरो जाला म्हणून तुका जेन्ना हे प्रॉमीस दिला, तूं जर हे प्रॉमीस घेताय जाल्यार तूं कितलेंय चूक तूं गायांनी बरो जालोच. सो हे त्यात अब्रामाच्या केसीक कितें प्रॉब्लेम आहा. कित्याक देवाक ती नखेत्रां मेजूंक सांगता, ते रेंवोन चलोवंक लायता. ओके तेका एक दीस देव येवन मेवता. 15:1 वाच. 1 जेनेसीस. एका दर्शनान सर्वेस्पराचें घर अब्रामाक पडीत जालें. अब्रामाक भिवू नाका, हांव तुजो दाद, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. पळय आमकां कितले फावटी म्हणटात देव भिवू नाकात, तुमकां सासणीक जिवीत दिला, भिवपाचें ना, भावार्थान रावा. तशेंच म्हणटा अब्रामाकूय
तू काय भिवू नाका एके दर्शनान म्हणजे तेका येवन विजन आमकां तरी गाठीक मारून तूं बरोवले आनी उतरां प्रमाणे आमकां सांगता ताका तर विजनान येवन तें उतर दिवचें पडलें आमकां तर बुकान ऑलरेडी हा फिक्स बरोवन दवरलेलें हा आनी तेका ते विजनान येयले उतर आनी देवान सांगलें त्या विजनान त्या दर्शनान की तूं भिवू नाका जायते व्हडले इनाम म्हाजे कडेन तुका मेवतलें तो मागीर कितें म्हणटा इनाम पळया आतां कितें म्हणटा अब्रामान जबाब दिलो माझ्या देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय की तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय म्हाका भुरगीं बाळ कांय ना म्हाका ग्रेस म्हाजे कडेन ग्रेस काय सगळे बायल सगळे आहा कांयच ना पण तूं कितें दिवंक सोदताय म्हाजे कडेन सगळे आहा कितें जाय तेका वाच म्हज्या घराघराचो दायजी नमस्काराचो विचार जातलो तो तूं म्हाका कितें दितलो आनी दा वाच प्रेज गॉड अब्रामान जबाब दिलो म्हज्या देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय म्हाका भुरगीं बाळ कांय ना काय ना भुरगीं बाळ कांय ना भुरगीं बाळ कांय ना भुरगीं बाळ कांय ना भुरगीं बाळ कांय ना काय ना म्हज्या घरादाराचो दायजी दायजी दामास्काचो एलिझर जातलो आता तुका भुरगीं ना आनी तुजे कडेन भरपूर ग्रेस काय आहा आनी तूं दुसऱ्याच्या भुरग्याक पोसके करूंक सोदताय तुका बरें दिसता तें तुका जाय दुसऱ्या भुरग्यांक तुजे सगळे प्रॉपर्टीचेर हे घेतलेले आतां उपाय ना म्हणून ताका घेवचें पडलें आनी तो म्हणटा देवाक तूं म्हाका व्हडलें इनाम दितलो तूं कितें दिवंक जाता म्हाजे कडेन भुरगीं म्हाका भुरगीं ना ओय त्या भायर हांव म्हणटा ताका दूख कहें म्हणजे कितें ते दामेस्कसच्या एलायजाचे ताका सगळी प्रॉपर्टी ताजे नांवार वयतली ताजे उपरांत ताजे आपले भुरगे ना सो देवाक सांगता ताका जाय कितें भुरगें ना प्रेज गॉड म्हाज्या घराचो दायजी बोलतोच जाता म्हाजे भुरगे जावंक जाय आसले पूण म्हाका भुरगीं ना प्रेज गॉड इंग्लिशीन म्हणटा आय एम गोईंग चायल्डलेस म्हणटा की ना प्रेज गॉड आय एम सीइंग I go childless. And Abraham said, Lord God, what will you give me? Seeing I go childless, तू पळयताय हांव भुरगें नासलेलो. And the steward of my house is the Eliezer of Damascus. माझा घराचो दायजी जावन आसा इलायझर. माझो भुरगो न्ही. I'm going childless. ओके देवान जेन्ना देवान प्रॉमिस दिला ताका की तुका राष्ट्राचो बापूय केला पयलें दिलें तेणें आनी मागीर जो राष्ट्राचो बापूय तुका केला म्हणून दिला ओके आतां इवन दो देवान आपली प्रॉमिस दिला पूण तोरी ताच्या जिवितांत तें घडोवन येवचें ना कित्याक येवचें ना कित्याक तो म्हणटा ताजी चिंतना आसा चायल्डलेस पोसक्योचो मागीर पयलें ताच्या मनान कितें आसा भुरगें नासलेलो मनान कसली चिंतना आसा भुरगें नासलेलो जो ताजें मन ओके ऑलरेडी चलता ताज्या मनान की म्हाका भुरगीं ना सो तुका जो मनान ऑलरेडी फिक्स जाल्लें आहा बिलीव करताय की तुका भुरगीं ना दॅट इज युअर बिलीव तुजी चिंतना तुका बिलीव करूंक लायता कितें बिलीव करूंक लायता तुजी चिंतना जें कितें तुका दोळ्यान दिश्टी पडटा तेंच चिंतना येता आनी तेंच तुजे कडेन उलयता आनी तेंच तूं बिलीव करता प्रेज गॉड हालेलुया आता अब्रामाचे केसीक ताचे प्रॉब्लेम खंय आसा प्रॉमिस इज दी गिवन प्रॉब्लेम खंय आसा ताजे मन चायल्डलेस म्हणून आसा आमकांय अशें सेम सिट्युएशन आमचेय प्रॉब्लेम आसा देवान
एकाचेर एक बसावणी दिल्या दिली असताना आमकां आयज बसावणी नाका, शिकवण नाका, डायरेक्ट देवा तूं कोर. देवाकूच सांगता तूं कोर आनी देवान म्हणटा आपूण केला, आतां तूं घे. आतां म्हाका विचार तूं घेवपाक कशें घेवपाक जाय जाल्यार हांव तुका धाडटलो कोणाक शिकोवपाक. खाली घेवपाक शिकपाक जाय. सो तेका आतां प्रॉमिस गावला, अब्राहमाक प्रॉमिस गावला. पूण प्रॉमिस गावला, प्रॉब्लेम खंय आहा? मनान. ताजी चिंतना कसली आसा? भुरगीं नासलेलो, चाइल्डलेस. सो रिजन ताका जेन्ना नेकेत्रां मेजूंक लायला, ते नेकेत्रां मेजूं येता. हॅलो, ती नेकेत्रां मेजूं येता? स्टार्स काउंट करूं येता? ना. जर स्टार्स काउंट करूंक जायना जाल्यार कितें जाता तुवें मागीर? What they are teaching you? That stars are countless. So मनान कितें आहा? चाइल्डलेस. स्टार्स कित्याक शिकयता? काउंटलेस. सो तुजो एक जो फॉर्म घेतलेलो आहा. कितल्यान इडली खाता? इडली सान्नां इडली खाल्ल्या? प्रेज गॉड. आतां तूं समज डेली इडली खावपी मनीस, ओके, तो आतां एक एक इडली करून ते करिना, तो डायरेक्ट भायर कंटेनर मेवता इडली सोमते स्टीम घालून तिका सोमते इडली जाता पळय तशें. आनी ती जेन्ना कंटेनर मेवता, रावंड शेपाची कंटेनर मेवता आनी तूं रावंड शेपाचेच खाताय. प्रेज गॉड. हय की ना? आं, आनी तुका समज तुजें किचन आहा, केटरिंग आहा, तुका इडलीची ऑर्डरी मेवता आनी तो तें व्हडलें हें हाडटाय सगलें आयदन आनी तितून इडली करून तूं धाडटाय. हय की ना? आतां कोणें तरी तुका समज ऑर्डर दिलें, म्हाका इडली जाय, पूण म्हाका रावंड शेप नाका, म्हाका स्क्वेअर शेप जाय, म्हाका रेक्टेंगल शेप जाय. कितें करतलें? म्हाका एंगल शेप जाय. कितें करतलें? तुजे कडेन आयदन आहा, ऑलरेडी तुजे कडेन आयदन आहा, पण ती आयदनां कांय कामाची ना. हेलो, इडली खाया कभी? नहीं खाया? खाया नहीं खाया? इडली कैसा होता है? राउंड राउंड होता है ना? हाँ. आणि जर इडली जर राउंड शेप करपाचे तुझे कडेन ऑलरेडी कंटेनर आसा आनी तुका ऑर्डर मेवता, स्पेशल ऑर्डर मेवता आनी बरें व्हडलें ऑर्डर मेवता, जाल्यार तुका आतां ती शेपीची नाका, दुसरी शेपीची जाय, करतलें कितें तूं? सो दुसरें आयदन हाडचें पडलें की ना? तें आयदन कोणच्याक मारचें पडलें की ना? आयदन आसतना पासून कांय फायद्याची जावंक ना. प्रेज गॉड. तशीच आमचे कडेन तो फॉर्म घेतलेलो आहा, शेप घेतलेले आहा. कितें? जशें तेजे मनान शेप घेतलेलो आहा. ओल्ड आयदन आसा, ते ओल्ड आयदनान कसलें आहा मनान? की ओल्ड मायंड सेज आय एम गोईंग चाइल्डलेस. प्रेज गॉड. सो तुजी उतरां म्हणजे ती बेटर म्हणजे आतां ते आमी घालता बेटर. सो तुजी उतरां म्हणटा आय एम गोईंग चाइल्डलेस. सो ती बेटर घालता, शेप तुजे कितें आतले आहा पळय तेच शेप येता, गोईंग चाइल्डलेस. प्रेज गॉड. हांव भुरगीं नासलोलो आनी ह्या कंटेनरान देवाचें असायनमेंट दिला. देवान जर तुका ऑर्डर दिला जाल्यार ह्या तुजे ओल्ड कंटेनरान तें देवान दिल्लें तें ऑर्डर नाका देवाक. प्रेज गॉड. समजता की ना? आमची जी आदली मनां आहा, आदली चिंतना आसा, त्या चिंतनान देवाची बासावणी फिक्स जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया. जब हमें इडली, चलो हमको इडली हमारा केटरिंग है और हम इडली बना के बेचते हैं समझो, और इडली जो हम बनाते हो राउंड शेप है, और ऑर्डर आता है, कोई भी बहुत बड़ा ऑर्डर देता है और उसको राउंड शेप नहीं चाहिए, राउंड शेप छोड़ के कोई भी शेप चाहिए, क्या करोगे?
जो बर्तन तुम्हारे पास है इडली बनाने का, वो राउंड शेप बनाने का है, तो वो इडली का जो बर्तन है इस्तेमाल होगा नहीं, वो बर्तन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। नया बर्तन लाना पड़ेगा, जिस हिसाब से उसको आपको शेप बना के देना है। वो ऑर्डर तुमको चाहिए, वो ऑर्डर से तुम्हारा बहुत सारा पैसा आ सकता है, तो ऑर्डर वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बर्तन ही दूसरा लाना पड़ेगा, वो बर्तन का कोई काम का नहीं। वैसा ही हमारा मन में जो पुराना दिमाग है, उसके हिसाब से अब्राहम के दिमाग में क्या था, मेरे को कोई बच्चा नहीं, दिमाग में क्या था, मेरे को कोई बच्चा नहीं। अगर उसका दिमाग में बच्चा नहीं है और इस तरफ ईश्वर ने बोला है तुमको पूरा देश का, कई देशों का बाप बनाया, एक देखने के लिए बेटा नहीं है, ऊपर से उसका उम्र गया है, 70 और 5 साल का हो गया है, अब कौन सा बच्चा हो सकता है उससे। सो बच्चा होने का उम्र चला गया, तो उसने अभी क्या सोचा है, बच्चा तो हमारा होगा नहीं, तो हम वो दाइमस का एलेजर को हम अपना वारिस बनाते हैं, उसका अपना वारिस बनाते हैं। प्रेज गॉड, दूसरों को गोद लेंगे। लेकिन अब उसका जो दिमाग में चल रहा है, ईश्वर ने उसे बताया कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं जो चाहिए तुमको इनाम दे सकता हूँ। तो उसने बताया मेरे पास तो बच्चे लोग नहीं हैं, मेरा खुद का बच्चा नहीं है, अब इतना प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब मेरा जायदाद किसको जाएगा, जिसको मैं वारिस बना रहा है, और दूसरे के बच्चे को। प्रेज गॉड, चाचा के लड़के को भी देने को दिल होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी हो, चाचा हो चाची हो, किसी का बच्चा हो, नहीं, अपना बच्चा अपना होता है। ईश्वर ने उसे दिया, क्या दिया? बच्चा दिया नहीं, वचन दिया, चल तेरे को मैंने कई राष्ट्रों का पिता बनाया। क्या दिया? बच्चा नहीं दिया। और हम लोग यहां गलती क्या करते, भगवान मुझे बच्चा दे, मैं बच्चा दे, मुझे शादी के लिए बीवी दे, शादी के लिए पति दे। सो हम लोग क्या मांगते हैं? बच्चा दे। अब बच्चा नहीं दिया तो हम भगवान पे छोड़ देंगे, आशा से निराश हो जाएंगे, फिर हम भटकते रहेंगे हर दुनिया का उनका सब कुछ। ये एक बोलता आदमी तो वो करेगा, दूसरा बोलता तीसरा, ये डॉक्टर के पास जा, वो जा, सब करके इलाज करेंगे, लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो बाद में थक के चुप बैठ जाएंगे। प्रेज गॉड। सो ईश्वर ने यहाँ पे क्या बोला, तुमको मैं राष्ट्रों का पिता बना दिया। बनेगा नहीं, बना दिया, वचन ही दे दिया। ईश्वर पहला क्या देता है? बच्चा नहीं, वचन देता है, वो अपना प्रॉमिस देता है। और जब ईश्वर वो वचन बोलता है, मतलब वो वचन कभी कैंसिल नहीं होने वाला। खुद भी वो उसका वचन को वो स्टॉप नहीं कर सकता। एक बार बोल दिया मतलब होके रहेगा। उसका वचन को तोड़ने वाला कोई नहीं है। आज ईश्वर पवित्र क्यों है? क्योंकि उसका ही वचन के उल्टा वो नहीं चलता। उसने जो बोला उसके हिसाब से वो खुद चलता। इसलिए बोलने से पहले ध्यान रखो क्या बोल रहे हो। अगर बोल रहे हो, अगर उसके हिसाब से नहीं चलना तो चुप बैठो, बोलो मत। हमसे कितना गलती होता है सर, हम बोलते हैं लेकिन उसके हिसाब से कहां चलते हैं। बोलते हैं, करते दूसरे। हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस। सो आमचे उलोवप एक जाता, करपाचें दुसरें जाता। पूण देव कितें करता, जें कितें तेणें उलयलें ताच्या आड तो आपूण वचना, पूण आमी वयता देवाच्या आडी वयता, आमच्या उतराच्या आडी वयता आमी, देवाच्या उतराचेय आड वयता, आमचे उतराचे आमी आड वयता।
म्हणून ते पातोक जाता. देव पातोक पातकी न्हय कित्याक तो आपल्याच उतराचेर आडोसो ना. सो तेजेमध्ये आनी आमच्या कितें डिफरन्स आसा तें पळय. आता एका भुरगे जाय, इनको बच्चा चाहिए, क्या से दे सकता है मुझे? जब ईश्वर ने बात किया, क्या दे सकता है? मेरे पास तो बच्चा नहीं है, मैं तो दूसरे का बच्चे को अपना वारिस बना रहा हूं. तो उसको वचन दिया कि तुमको कई राष्ट्रों का बाप बनाया, पिता बनाया. प्रेज गॉड. अब वो वचन तो दिया, प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि वो उसका मन में लेके बैठ गया है, बिलीव करना चालू हो गया है और बिलीव कर रहा है कि मेरे को बच्चा नहीं है. अगर वो दिमाग में, तुम्हारा पुराना दिमाग में का जो सोच है, वो सोच से ईश्वर का प्रॉमिस नहीं फुलफिल होगा, ईश्वर का वचन नहीं सच में आएगा, हकीकत में होएगा. देवान जर प्रॉमिस दिल्या आणि ही बासावणी दिला, ही बासावणी सोत जावचे ना जर तुझ्या पोन्ने सोयीब घेऊन आहाय, पोन्ने चितना घेऊन आहाय. म्हणून आयज आमकां सांगता रिपेंट. रिपेंट म्हणजे कितें? म्हणजे तुझे आदले सोड, नवे घे. प्रेज गॉड. तुय तेका रिपेंट म्हणूंक ना, तुय तेका एक्सरसाइज करपाक ताणेन तेका एक्सरसाइज दिले, उनको काम दिया कि उसका मन जो है ऐसा सोचता कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है. अगर उसके दिमाग में कोई बच्चा नहीं है, अगर उसको ये इडली बनाने के लिए जो उसने लाया है बर्तन, वो राउंड बनाने का और ऑर्डर मिला है कि स्क्वायर बनाओ, दूसरा शेप का बनाओ, तो वो जो है पुराना तुम्हारे पास जो है वो कोई काम का नहीं है. अगर ईश्वर का ऑर्डर दिया हुआ है और तुम्हारा पुराना बर्तन से तुम वो बनाओगे इडली बोलेगा, तो तुम्हारा नहीं चलने वाला, तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा. वो ऑर्डर तुम्हारा पेंडिंग होगा. बहुत सारा कमाई कर सकते थे, नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुराना बर्तन से मैं नहीं राउंड ही ले लो ना, राउंड ही ले लो ना. ईश्वर को बोलते हम लोग. देवा किती सांगता आम्ही, देवा माझ्याकडे येत आहे ना, तो येत घे न्हू. देवाक आम्ही कन्व्हिन्स करून पेटता. देवाकूच सांगता तू चेंज जा, आम्ही चेंज जाऊचे ना म्हणना. देवाक चेंज जा म्हणटा, देव को चेंज ते उतो दिला, तू रस्त्याचा बापूय केला, तो को चेंज जातो. आम्ही देवाक चेंज करता आणि तेका शॉपिंग लिस्ट जाता मागीर सगळे. देवान आपले वचन धाडला आणि आम्ही तेका शॉपिंग लिस्ट धाडटा. प्रेज गॉड. जे कितें कितें जाय पळय सगळे शॉपिंग लिस्ट आमचे सगळे देवा कडेन आमी धाडटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां शिकोवंक नाका. आतां तेका पळय प्रॉमिस दिला, पूण तेका शिकपाक ताजें मन बदलपाक शिकवण दिला, एक्सरसाइज दिला. मन बदलपाक एक्सरसाइज दिला. क्या ताजें मन बदलो ना, पुराना बर्तन निकाल के नया बर्तन नहीं लाएगा. जो ऑर्डर मिला है उसके हिसाब से अगर बर्तन नहीं लाएगा तो तुम्हारा ऑर्डर तुमको नहीं मिल सकता. प्रेज गॉड. सो पुराना बर्तन से नया ऑर्डर को नहीं बना सकते. इसलिए उसका पुराना बर्तन में शेप था. क्या शेप था? कि मेरे को कोई बच्चा नहीं है. अगर वो दिमाग में है मेरे पास कोई बच्चा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि पहला तो मैं बुढ़ा हो गया, बीबी भी बुढ़ी हो गई, अभी उम्र भी नहीं है बच्चा होने का, तो अभी तो हम लोग गए काम से, कोई फायदा नहीं. अब दूसरे का बच्चा हमारा बच्चा बनाना पड़ेगा. कई प्रॉपर्टी का मालिक है. प्रेज गॉड, हालेलुया. यही हम लोग का गलती होता है. इसलिए हमको बोलता है कि मन फिराओ. मन फिराओ मतलब क्या है? तो अपना सोच बदलो. सोच कैसा बदल सकते हो? अब उसका सोच क्या है? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है. और जब तक वो रिपेंट नहीं होएगा तब तक उसका जो प्रॉमिस है, जो ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर उसको नहीं फायदा होगा. प्रेज गॉड.
अगर उसको वाटर जो मिला है उसका फायदा लेना है तो डेफिनेटली हमको ये वचन जो दिया है, अगर उसको वचन दिया है कि तुम स्टार्स गिनती करो, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज सगळे खुर्च्या खाली या फुडल्यात, प्रेज गॉड, तुमका बसपा म्हणटा, थँक्यू जीजस, हालेलुया। सो आता गमन येता आमचेकडे खंय मिस्टेक जाता ते आमी परत परत सेम मिस्टेक्स करता आनी देव जो इतलो लागीं, स्वर्ग जो इतलो लागीं आसा ताका पयस करून दवरता आनी आमची कामां जायना, पेंडींग उरता। तुझ्या उतराचो मोल कांय जायना, तुझें उतर वेस्ट वयता, कित्याक ओल्ड आयदोळान न्यू असाइनमेंट करूंक सोदता, रायट। ओल्ड आयदोळान तुझे न्यू, सो कन्वर्जन म्हणजे कितें, कन्वर्ट करचें पडलें। कन्वर्ट म्हणजे कितें, आदले आयदोळ सायडीक घालचें पडलें, न्यू आयदोळ घेवचें पडलें, कन्वर्जन चेंज करचें पडलें, प्रेज गॉड। आमी आदलेच आयदोळां घेवन आदलेच शेपीचें आयदोळ घेवन आसा आनी रडत हा, दिमयो घालीत हा आनी आमी सगळें आंगण करीत हा। तुझे आंगण कर, रोड आनी कितेंय कर, दिम्यो घाल, रोगत येवनी, तुझे दुकां येवनी, कांय फायदो ना, तूं गाडी शिकोवंक पावचोच ना। कितलोय रोड, गाडी शिकोवंक पावचोच ना, गाडी शिकताय कितले हरी पड, कांय प्रॉब्लेम ना, तरी उबो राव आनी तरी गाडी स्टार्ट मार आनी चल, तूं एक न एक दीस गाडी ते शिकोवंक पावतलो। आमकां गाडी शिकपाचें अशी कितें हा, प्रेज गॉड, गाडी शिकपाची आमकां खबर आहा म्हणून आमी कोण आमकां शिकयता पळय ती गाडी ताजे कडेन वयता, होय की ना। आयज जेन्ना देवान पवित्र आत्मो धाडला आमकां स्वर्गीचें शिकवण दिवपाक, जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या गायडन्सान आमी स्वर्गीचें राजवट, स्वर्गीचें गिन्यान शिकपाक जाय की ना। हॅलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। देव आमकां आयजूय म्हणटा, वन स्क्रोल डावन, कोंकणी वाच, वन, प्रेज गॉड। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। हमको भी बोलता है, हे मेरे बच्चों मत डर, लेकिन डरने के लिए हम लोग चैंपियन हैं। कुछ भी थोड़ा ये हो गया, घबरा गया, हम क्या होगा, प्रेज गॉड। पहला वचन ईश्वर से आता है, मत डर। डरना या विश्वास रहना सब आपका हाथ में है, ये ईश्वर का हाथ में नहीं है। जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वो ईश्वर हमको बोल रहा है तुम कर। अब जो हमको करना है वो ईश्वर बोलेगा ये तुम्हारे हाथ में है, तुम करो। मेरे हाथ में जो है मैं तो कर चुका हूं, जो कुछ मेरे हाथ में था मैंने किया है, अब तुम्हारे जो हाथ में है मैं बोल रहा हूं क्या करना है। ईश्वर ये भी बोलता है हमको क्या करना है, और वो बोलता है डर मत। लेकिन थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, डरना चालू हो गया। हालेलुया। थोड़ा सा सैड न्यूज आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज हो गया, डरना चालू हो गया। अब क्या होगा, कई लोग तो फ्यूचर का में डर रहे, अरे आज हमारे पास कुछ नहीं है पैसा, कल क्या होगा, प्रेज द लॉर्ड। इसी का डर में है कल क्या होगा। आज कितना अच्छा जी रहा उसका धन्यवाद नहीं कर रहे, कल का डर के आज ही एकदम चिंतित हो गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो फाल्याचे आम्ही चिंतून आयज आम्ही हुसकेता। देवान फाल्याचे चिंत म्हटलं आमकां ना, आमकां फाल्याचे चिंत आयजूच घेवन आयजूच आमकां टेन्शनान जावपाक जाय, चिंतान बुडोवपाक जाय। म्हणून पयलें आमकां सांगता
भिवपाचें ना, भिवप ना. आणि हे भिवप हो भावार्थ आसप हें देवाच्या हातीन न्हय, तुज्या हातीन आसा. कृपा हा म्हणटा पळय देवाच्या हातीन आहा आनी ताणें आमकां फ्रीली दिला, अवेलेबल आसा. कृपा ना जाल्यार पासून तुका भावार्थ येवचो ना. कृपा हा म्हणून भावार्थ आहा. सो देवा सायडीच्यान जे तेका करूंक जाता आनी करूं येता ताजे कडेन तेजे हातीन कितें आहा पळय तितलें करून काडलें. इट इज फिनिश्ड म्हणटा. फ्रॉम गॉड सायड इट इज फिनिश्ड. नाव इन युअर सायड. प्रेज गॉड. इट इज फिनिश्ड. जाल्या, सोपडायलें म्हणटा. सगळें सोंपलें. जे देवा कडल्यान कितें करूंक जाय पळय तें. तोरी देवाक म्हणटा तूं हें कर, तूं तें कर, म्हाका हें सगळें तेकाच म्हणटा. प्रेज गॉड. देवाकूच सांगा तूं कर. अरे हांवें कितें आहा तें केलां. माय प्रॉमिस इज अ ग्रेस टू यू. आई हैव गिवन यू माय प्रॉमिस. मेरा वचन तुमको दिया है, ये कृपा है. मेरा वचन ये कृपा है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसका वचन कभी फेल नहीं जाएगा. उसका वचन दिया मतलब काम हो गया. प्रेज गॉड. लेकिन उसका वचन दिया ना, बच्चा थोड़ी दिया है. तो बच्चा नहीं दिया इसलिए हम पे उस पर भरोसा नहीं है. वचन से क्या खाऊंगा, खाऊंगा क्या बच्चा. प्रेज गॉड. सो अब्राहम के पास सब कुछ है लेकिन बच्चा नहीं है. वो अभी भी बिना बच्चे का है और बहुत बड़ा मालिक है. सब उसका जो भी जाने वाला है दूसरों को जाने वाला है. एक दिन दर्शन में क्या बोला, अब्राहम के पास पहुंचा. दर्शन में कौन आया, खुद ईश्वर आया. हे अब्राहम मत डर, क्योंकि जहां डर है वहां भगवान स्टॉप हो जाता है. जिसका दिन मन में डर है, जो डरना चालू किया उसने अपना जो रिलेशन है ईश्वर से कट ऑफ हो गया. भिरांत येवप म्हटल्यार देवसराक इन्विटेशन दिवप. भिरांत म्हटल्यार देवसराक आपोवप. देवा कडल्यान भिरांत ना, देवसरा कडल्यान भिरांत आहा. देवा कडल्यान कृपा दिल्या आमकां भावार्थ येवपाक. देवान आपली सगळीं कामां करून आमकां ताणें केल्या आपल्या सायडीची कामां. आतां जें कितें उरलां पळय आमचे सायडीक, आनी आमचे सायडीक जर आमचें पयलो काम सुरू करूं जाय जाल्यार भिरांत म्हणटा पळय हें वस्त भायर मारपाचें. तें आमच्या हातीन आहा. आनी जें कितें आमच्या हातीन आहा तो देव करचो ना. देवाच्या हातीन आहा, देवान केल्या. करतलो न्हय, केल्या. तरी आसतना देवाक आमी कर 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 म्हणून आमचे मागणे आसता. आनी देव म्हणटा हांवें केला 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 म्हणून सांगीत आसता. आनी दोगां मदीं तितलेंच वयता, थंयच आमचे दीस काबारता. प्रेज गॉड. आतां देव स्वता आपल्या तोंडांतल्यान म्हणटा तेका अब्राहमाक भिवू नाका. प्रेज गॉड. सो सगळें व्हडलो आमकां कितें आहा, उस्कें, भिरांत. भिरांतींतल्यान कितें येता, हुस्को येता की ना. सो तो हुस्को येतकूच देवाक आमी पयस दवरता, देवसाराक लागीं घेता. भिरांत येतकूच देव कट ऑफ जाता, देवसार लागीं जाता, देवसाराक कनेक्ट जाता. सो भिरांत म्हणजे देवसाराक कनेक्शन, भावार्थ म्हणजे देवा कडेन कनेक्शन. खंयचें जाय आमकां, भिरांत. हांगा म्हणिना की विश्वास मत रखो और विश्वास नहीं रखना. उसने बोला मत डरो, डरना नहीं है, भिवपाची गरज ना. मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ. प्रेज गॉड. आज भी हमें यही बोलता है, आज भी ये सांगता, मैं कौन हूँ, तुम्हारा ढाल हूँ, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ. तुका कितें जाय दिव हा पळय सगळें दिवपी हांव. मैं वो तुम्हारा ढाल हूं जो तुमको रक्षा करता है. मैं तुम्हारा वो फल हूं जो तुमको कुछ भी दे सकता है. प्रेज गॉड. जैसा अब्राहम को बताया वैसा ही हमें हर एक वचन में बता रहे हैं.
जशें अब्राहमाक सांगलें तशेंच आमकां दर एक उतरान आमकां सांगता, भिवू नाकाच, पूण हांव तुमचो राखणदार, हांव तुमचो असली फळां दिवपी, जी इम्पॉसिबल ते पॉसिबल जाता पळय तशें. प्रेज गॉड. सो हे पुरो न्हय आमकां. जेन्ना अब्राहमाक मेवलें, अब्राहमान आनी उगत करूंक ना, म्हाका कितें मेवतलें, हांव जर भुरगें नासलोलो म्हाका कितें मेवतलें, म्हाका दितलो. म्हाजे प्रॉपर्टीचो म्हाजे सगळें दायजी आहा म्हणटा पळय तो दुसऱ्यांक वयता. एलेझर दामेस्कस एलेझरा पळय तेका वयता. ऑलरेडी नांव घेवन सांगता तेका पळय ऑलरेडी म्हाका पोस्को घेवचे पडले, दुसऱ्या भुरग्यांक पोस्के घेवचे पडले. तुजो कितलोय लागींचो रिलेटीव आसूं तो, पण तो भुरगो तुजे प्रॉपर्टीचे तो जर वारीस जाला, तो दायजी जाला जाल्यार तुका तें बरें दिसना. पण आपलो भुरगो जर जाला जाल्यार हां बरें दिसता. अब्राहमाक तें नाका आसलें, दुसऱ्या कडेन ताजे सगळे ग्रेस्कार दुसऱ्या कडेन गेल्ले. प्रेज गॉड. तेन्ना देव कितें म्हणटा पळय, मागीर कितें म्हणटा, स्क्रोल अप. अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन, मतलब क्या होता है संतानहीन. प्रेज गॉड. हिंदी में समझ में आता है ना, संतानहीन का मतलब कि मेरे को कोई बच्चा नहीं है. हमको भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है आज जीवन में. उसको तो बच्चा नहीं था, बाकी सब था. हमको तो बच्चा है, लेकिन अलग अलग परेशानी है. किसी को बीमारी का परेशानी है, किसी को गरीबी की परेशानी है, किसी को काम नहीं हो रहा है, किसी का नौकरी नहीं मिल रहा, किसी को पार्टनर नहीं मिल रहा, किसी को कुछ न कुछ आज जीवन में, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का काम नहीं लग रहा है. कोई न कोई आज लफड़ा है हमारा जीवन में, है लफड़ा. प्रेज गॉड. और फिर रोते रहते, भगवान कर कुछ, और कुछ नहीं किया तो लास्ट में एक दिन भगवान करेगा करके दिमाग में सोच के बैठ जाते हैं. प्रेज गॉड. निराश हो जाते हैं. अब वो निराश है, क्या बोल के निराश है कि मैं संतानहीन हूं, मतलब कोई भी नहीं है मेरा संतान, संतान नहीं है मेरा, संतानहीन. मेरा प्रॉपर्टी का जो वारिस, जो मेरा जो क्या बोलता है प्रॉपर्टी को, मेरा घर का वारिस जो है दूसरे को जा रहा है, मेरा खुद का बच्चा नहीं है, मेरा खुद का संतान नहीं है, मैं तो संतानहीन हूं. सो ये जो संतानहीन जो उसने बोला, वही उसका दिमाग में सोच भी है और बिलीव भी है. प्रेज गॉड. फिर उसको ईश्वर ने उसको क्या किया, प्रॉमिस दिया. क्या प्रॉमिस दिया, सबको मालूम है ना. वचन दिया, चल मैं वचन देता हूं आज से कि तेरे को मैं राष्ट्रों का पिता बनाएगा. है क्या नहीं. तेरे को मैं राष्ट्र का पिता बनाएगा. बोला तुका राष्ट्राचे बापूय करतलो. सांगला कितल्या जाणांना तुका राष्ट्राचो बापूय केला. प्रेज गॉड. तुका राष्ट्राचो बापूय करतलो. तुका राष्ट्राचो बापूय, प्रेज गॉड, करतलो केला. प्रेज गॉड. सो जेन्ना देव उलयता, बाबार्थ उलयता की होप उलयता. करतलो म्हणजे होप, करेगा म्हणजे होप, किया मतलब विश्वास, बाबार्थ. प्रेज गॉड. सो किया जो ये विश्वास
ईश्वर का मुंह से निकलता है विश्वास का शब्द, और उसका विश्वास का शब्द वो कभी भी विरुद्ध नहीं जाता। खुद का विश्वास का शब्द के विरोध कभी नहीं जाता, इसलिए उसको पवित्र बोलते हैं। हम लोग अपना ही शब्द के नहीं, इवन भगवान का शब्द के ही उल्टा जाता है, जाता कि नहीं? उसका वचन भी हम उल्टा जाता है और अपना वचन के उल्टा जाता है। आम्ही जे उलयता पळय ताचे आड वयता आणि देवान कितें उलयला पळय ताचे आड वयता। असलो तुजे कडेन जर सैम आहा, असले तुजे जर मन आहा, असले तुजे तुजे मानप आहा, असले तुजे बिलीव आहा, तसल्यान देवान दिल्ली भासावणी जातले ना। म्हणून आमच्या भितरान देवामध्ये कितें फरक पडटा की देव आपूण कितें सांगता तें ताचे आड वचना। आमी कितें सांगता पळय आमी आड वचपाक चॅम्पियन, देव कितें सांगता पळय आमकां ताचे आड वचपाक आमी चॅम्पियन। आनी अशें आमकां शिकपाक जाय म्हटल्यार नाका देवा शिकय नाका, म्हाका डायरेक्टूच भुरगे दी तूं, आनी म्हाका शिकय नाका, म्हाका डायरेक्टूच भुरगे दी। तुझी आनी प्रिचींग आनी टिचींग नाका आमकां। आमी जाताले आराधना करता आबा शांगाला बारांदोरो, आमी आराधना करता तूं दी आमकां। तुज्या रे दिवपाक देवाक प्रॉब्लेम ना, पण तुज्या मनान जे तुजे आयदोण जे आहा पळय ते आयदोण फिट जायना, तुजे आयदोण ते नाका, दुसरी आयदोण घेवचें पडटलें तुका, दुसरे आयदोन घेवचे पडटे। ताजे मनान हा मैं संतानहीन हूँ, सो ये पुराना वाला जो सोच है, पुराना वाला जो शेप है, पुराना वाला जो इडली बना है वो इडली नहीं चलेगा, उसका शेप वाला इडली नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। इसलिए पुराना सोच, जैसे किसी ने कुछ बोला जल्दी गुस्सा जाता है, ये पुराना है या नया है? हेलो, कोणे कितें म्हटले रोखडो राग येता की ना? ना, राग येना आमकां, आमी आतां न्यू न्हू सगळीं। कोणे तुका बेश्टें चावून घातले, तुका राग येता मोग येता? राग, राग हो पोन्नो न्यू, पोन्नो न्यू कितें? मोग। प्रेज गॉड। सो तुजे पोन्ने आयदोणान देवाची वस्तू फीट जायना, सो तूं पोन्ने आयदोण घेवन खूंय भोंवताय? देव भुरगे दी म्हणून देव भुरगे दिवचो ना, देव दितलो बासावणी, देव दितलो तुका वचन। ईश्वर देगा वचन, तुमको बच्चा नहीं देगा, वचन देगा। बच्चा चाहिए वचन मिलेगा, बीबी चाहिए वचन मिलेगा, पति चाहिए वचन मिलेगा, जॉब चाहिए वचन मिलेगा, बिजनेस सक्सेस चाहिए वचन मिलेगा, जो भी तुम्हें चाहिए मेरा वचन मिलेगा। तुका कितें जाय तूं सगळे देवा म्हाजे प्रॉब्लेम सोड, देवा म्हाजो घोवान सोडला, देवा म्हाज्या बायलेन सोडला, हें ना, तुका वचन मेवता, तुका उतर मेवता, तुका सोल्युशन जाय उतर घे। पण हें उतर तुज्या जिवितान जर लागोंक जाय पयले आदले आयदोण काड आनी भायर मार, दुसरें आयदोण घे। प्रेज गॉड। खंय मिस्टेक जाता ते पळया। प्रॉमिसान मिस्टेक ना। आमी म्हणटा अरे देव इतलो प्रॉमिस दिवपी आनी देवाचें उतर केन्ना फील वचना, जाल्यार म्हाज्या जिवितान देवा सांगला तर म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्यार हॉस्पिटल भरला, सगळे हॉस्पिटलान आहा, अर्दो गांव हॉस्पिटलान पडलेलो आहा। कित्याक? तेंच्यांनी म्हणूंक नासतलें जेजू हांव तुज्या गायांनी आजून पासून बडबडटा, जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जालेली। कित्याक जायना? तुजे जर आदले आयदोण आसा जावचें ना। तुजे जर नवे आयदोण हाडले जे देवाचे बासावणी फिक्स जाता, शुअर तुका आनी 8 दीस आनी 10 दीस आनी 100 दीस लागना, दुसरे दिसा त्याच टायमार जावंक जाता। सो आयज जे कितें आमच्या लायफान पेंडींग चलता म्हटल्यार पोन्ने आयदोणान नवे असायनमेंट घालूंक सोदता।
आता अब्रामाचे केस कितें, ताजे पोन्ने आयदोळ, कसले आयदोळ आसले मनान, कसले शेप आसले, संतानहीन म्हणून, भुरगे नासलेलो, चाइल्डलेस. ताका जर भासावणी दिला जाल्यार तुका राष्ट्राचो बापूय केला, तरी आसतना ताका भुरगे जावचे ना. कित्याक जावचे ना, कित्याक ताच्या मनान आदले आयदोळ आसा की मै संतानहीन अशेंच आमचे जे जे एरियांनी आमी देवा कडल्यान एक्सपेक्टेशन रावल्या की ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले जाय, ते जायना. कित्याक आमचें मन बदलोना. दॅट इज कॉल्ड रिपेंटेंस. मन फिराओ. इसलिए इसको क्या बोलता है, अब उसका मन में जो संतानहीन है तो उसको मन फिराना पड़ेगा. अगर उसका नहीं मन फिरा है तो फिर वो कितना भी बड़ा बड़ा वचन आने दो, वो वचन तुम्हारा जीवन में नहीं होने वाला. अब उनसे भी ज्यादा हमारे पास वचन है. कितने बड़े बड़े वचन दिया हुआ है हमारे लिए कि मैं तुम लोगों को सब शराब से मुक्त कर दिया, फिर भी अभी भी शराब में जी रहे. हॅलो, तुमका शिरापांतल्यान हांवें काडला म्हणटा तरी अजूनही शिरापानूच. कोणी कितें म्हटलें येवन, तुमगे शिराप आसा, तुका हेणेन तें केला, तेणेन तें केला, कोणाची वायट दृश्टी पडला तुजेर, लिंबू लाय, लिंबू मिरची लाय. प्रेज द लॉर्ड. गाडयेरी लायता, घराकूय लायता. प्रेज गॉड. तुजी मिरची आनी लिंबून कितें फायदो ते ना. तुजे बावली केला कोणें तुजे घरा वयल्यान उडयल्लें. आवय, किसने कुछ किया है रे बाबा, कोई जादू किया है, ये टेंशन में. प्रेज गॉड. जिसके पास ज्ञान है उसका टेंशन नहीं आने वाला. जिसके पास ज्ञान नहीं है वो टेंशन में जाएगा, वो चिंता में डूबेगा. इसलिए अगर तुमको बाइक चलाना आता है तुम डरेगा नहीं, सीधा मार चला. और अभी ऐसा मारने का भी जरूरत नहीं है, बटन मारो ट्र चला. प्रेज गॉड. क्यों? वो डरता नहीं है क्योंकि उसको मास्टर हो गया. अब इसको अब क्या है, ये मास्टर नहीं है. अब्राहम क्या है, बच्चा संतानहीन बोल रहा है, मतलब मेरे पास कोई मेरा अपना बच्चा नहीं है. सो दिमाग में क्या बैठ गया है कि संतानहीन, चाइल्डलेस. और इस सोच से ईश्वर ने दिया हुआ शब्द नहीं उसका जीवन में होने वाला. इसीलिए उसको ये सोच बदलने के लिए उसको बोला, चलो पूरी रात भर अपने बीवी के साथ नहीं सोना है. बच्चा चाहिए ना, बीवी के साथ नहीं रहना है, छत पे जाओ. प्रेज गॉड. दुनिया सिखाता है बीवी के साथ रहो, लेकिन लॉर्ड सिखाता है ऊपर जाओ, छत पे जाओ और क्या गिनो. क्या गिनाने को लगाया? तारे गिनाने को लगाया. क्यों? अरे बच्चा बीबी से होगा कि तारे से होगा? तारे से होगा. तारे से बच्चा होगा. तारे से मतलब जितने तारे हैं वो अपने तेरे अच्छे होंगे. प्रेज गॉड. सो यहाँ बीबी का बच्चा बीबी से होने वाला, लेकिन गिना तारे. क्यों? वही बच्चे हैं उसके. क्यों? फोकस्ड ऑन दैट प्रॉमिस. जितने आसमान में तारे हैं उतने तेरे बच्चे होंगे. हाँ, कितने भी बीबी के पास भी रहेगा ना तो ही उसका दिमाग में क्या रहेगा? संतानहीन, चाइल्डलेस. कितना भी उसका ये होने दो, अगर उसके बीबी पास रहेगा क्या लगेगा उसको? अभी भी संतानहीन. अगर उसका दिमाग में संतानहीन ही है तो कितना भी उसको अच्छा वचन मिल जाए कोई फायदा नहीं. कितना अच्छा गायन कर ले, कितना अच्छा वर्शिप कर ले, कोई फायदा नहीं है. क्योंकि उसका मन बदलना सबसे बड़ा जरूरी चीज है. और कब मन बदलेगा? जब तक उसको अगर ज्ञान नहीं दिया कि तुम तारे गिनो. क्या उसका बच्चा हो सकता था क्या? उसको ज्ञान दिया ना. अब ज्ञान सीखना किसका काम है? अब्राहम का काम है. सो उसने ज्ञान लिया.
कि उसको बच्चा चाहिए तो ज्ञान लिया, और ज्ञान लेके क्या किया, ज्ञान के हिसाब से छत के ऊपर जाके बीबी को ऐसे छोड़ा, तुम जा बेडरूम में सो जा, मैं जाऊंगा ऊपर, मैं अपना बेडी छत पे बनाऊंगा। प्रेज गॉड। तेकानी वयर काय ना, वयर सगळे मळप आणि तारे